चराउचरा महिला संरक्षण बिल को केंद्र कैबिनेट मंजूरी संसदर स्वतंत्र अधिवेशन में हेब आगत साकार हेब मुख्यमंत्री प्रचेष्टा 22 राजनैतिक दल निकट को नवीन पठाई प्रतिनिधि संसद में महिला संरक्षण लगी बारंबार दाबी करिछि बीजेडी विधानसभा गृहीत होइतिला संकल्प लोकसभा निर्वाचन में 33% सीट महिला को देइथिला दल। आरंभ हेब मुख्यमंत्री डिजास्टर रेजिलियंस लाइन एम्बांकमेंट प्रोजेक्ट 200 किलोमीटर लुणा नदीबंध को कराजिबो सुदृढ़ गाँ को पशिबनी समुद्र पानी हेब बात्या प्रतिरोधक खर्च हेब पाखापाखि 800 कोटी टंका नवेम्बर रु चलिबो काम निर्धारित समय पूर्व संपूर्ण करने को जल संपद विभागर योजना। खोलिब इरानी गैंग्र हनी ट्राप और ठकी गुमर आज स्वामी निशिकांत को 2 दिनिया रिमांड नेब पुलिस 2 दिन रिमांड नेबा को कोर्ट को अनुमति रुजु होईछि 4टी मामला बंधा हेलेनी 5 जन आगो को मुख्य कारपटदार पाली। सुंदरगढ़ रे काया बढ़ाउछि स्क्रब टाइफस 24 घंटे आउ 10 आक्रांत चिन्हट जिले में 193 पहुंचला मामला पूर्व जड़े रोगी होइतिला मृत्यु चिकित्सा पाई मौजूद रही यथेष्ट औषध सचेतन सांग को टेस्टिंग वृद्धि करने को निर्देश। धरापृष्ठ में विराजमान हेले आद्य पूज्य श्री गणेश गाँठू सहर सबु चलचंचल होमयज्ञ मंत्र प्रकंपित होउछि परिवेश चली विघ्न विनाशक आराधना विभिन्न शिक्षानुष्ठान में छात्र छात्री गहली सुउच्च तोरण सांग को आखि झलसा मेढ़ और साजसज्जा। नमस्कार बुलेटिन को आपण मानकु स्वागत करुछि मु शुभश्री महापात्र। संपूर्ण खबर को आसिबा ऋण जालियाती मामला रे सौम्यंक विरोध रे बढ़ुछि अभियोगर फर्द ईओडब्ल्यू रे रुजु हेला आउ 3टी मामला एने संगीन आरोप आनिछंती 3 जण पूर्वतन कर्मचारी आसीथिबा समस्त अभियोगर सबु दिगो को नहीं खोलताड़ करुछि तदंतकारी टीम आज भी होई पारे छानबीन ऋण जालियाती घटना रे मिलुछि सांघातिक प्रमाण सेहीपरि ऋण देइथिबा बैंक को मध्य तदंत परिसरभुक्त करा जायछि। गतकाली 7 घंटार जेरा करी संवाद भवनरू फेरीथिला ईओडब्ल्यू चढ़ऊ को नहीं प्रेस रिलीज जारी करिछि ईओडब्ल्यू संवाद विरोध में बढ़ुछि अभियोगकारी संख्या संवादर जड़े पूर्वतन कर्मचारी अभियोग आधार में एक मामला रुजु होइछि दफा 506 466 468 471 420 120 बी आईपीसी अनुसार मामला रुजु होइछि। जांच बेले अनेक संदेहजनक दस्तावेज जबत करिछि ईओडब्ल्यू ऋण जालियाती संपर्क में अनेक बयान रेकर्ड होइछि आहुरी 20 जन पूर्वतन कर्मचारी ऋण जालियाती अभियोग आनिछंती अभियोगकारी अभियोग अनुसार एकाधिक संवाद कर्मचारी को बलपूर्वक व्यक्तिगत ऋण नेबा पई बाध्य करा जायछि कोटी कोटी टंकारे कर्मचारी नारे संस्था ऋण उठाइछि जहाँकि संपूर्ण भावे बेआईन और कंपानीर कर्मचारी अगोचर में होइछि एभली अभियोग आनिछंती संवादर पूर्वतन कर्मचारी असीम महापात्र एने संवादर संपादक सौम्यरंजन पट्टनायक और मानव संबल अधिकारी बैजयंती करंक विरोध में मामला रुजु होइछि संवाद 300 रु अधिक कर्मचारी को ठकेई करिथिबा अभियोग होइछि ए ठकेई परिमाण 50 कोटी रु अधिक हेबो सेहीपरि जांच नहीं कनक न्यूज मिछ खबर प्रसारण करुछि बोली कहिछि ईओडब्ल्यू तदंतकारी अधिकारी कोनोसी चापर बसवर्ती नाहांती ऋण जालियाती घटना रे अधिक तदंत जारी रहिछि बोली कहिछि ईओडब्ल्यू। महिला संरक्षण बिल को केंद्र कैबिनेट मंजूरी 33% संरक्षण बिल को केंद्र कैबिनेट मिली मंजूरी आज आरंभ होइथिबा संसदर स्वतंत्र अधिवेशन में आगत हेब महिला संरक्षण बिल एही बिल पारित हेबा परे लोकसभा तथा राज्यसभा रे महिला मानक पई 33% सीट संरक्षित रहिबो संसद में महिला संरक्षण लगी बारंबार दाबी करुछि बीजेडी एही बिल को मंजूरी परे साकार हेउछि मुख्यमंत्री प्रचेष्टा महिला संरक्षण बिल लगी देशर 22टी राजनैतिक दल निकट को प्रतिनिधि पठाइथिले नवीन पट्टनायक एपरिक राज्य विधानसभा रे मध्य महिला संरक्षण बिल पाई पारित होइछि संकल्प।
महिलांको राजनीतिर सर्वोच्च स्तर में निष्पत्ति नेबार अधिकार मिलू एने ओडिशार मान्यवर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक नेतृत्व में दीर्घ वर्ष धरी दाबी होई आसुछि। 1992 प्रबाद पुरुष विजु पट्टनायक एक ऐतिहासिक निष्पत्ति नहीं पंचायत में महिला 33% आसन संरक्षण करथिले। तांको परे तांको सुपुत्र नवीन पट्टनायक महिलांको अधिकार सुरक्षा पाई गोटे परे गोटे जुगांतकारी निष्पत्ति नैछन्ति। 2011 रे ओडिशा ग्राम पंचायत आईन, पंचायत समिति आईन और जिला परिषद आईन रे संशोधन आनी महिलांको पाई संरक्षण 33% रु 50% को वृद्धि करथिले मुख्यमंत्री। सेही भली 2012 रे ओडिशा पौर परिषद और महानगर निगम आईन रे मध्य संशोधन अणा जाई महिलांको पाई 50% आसन संरक्षण करागला। तृणमूल स्तर में महिला सशक्तिकरण दिगरे यह थिला नवीन पट्टनायक आउ एक बलिष्ठ पदक्षेप। महिला सशक्तिकरण में नवीन को अभियान एठी सरी नथिला। महिला सशक्तिकरण बिना कौनसी समाज राज्य किंबा देशर विकास होई परिबो नाही। यह हेउछि नवीन पट्टनायक दृढ़ आत्मविश्वास, जेउथिपाई महिला सशक्तिकरण केवल एक स्लोगान नुहे, बीजेडी पाई यह हेउछि एक मंत्र। महिला सशक्तिकरण दिगरे आउ पादे आगकु जाई बीजेडी पक्षरु 2018 नवेम्बर मासरे विधानसभा और लोकसभा रे महिलांको पाई 33% आसन संरक्षण करने ओडिशा विधानसभा रे एक संकल्प आगत होइथिला। सर्वसम्मतिक्रमे ओडिशा विधानसभा रे यह पारित होइथिला। सेही वर्ष डिसेम्बर 5 तारिख रे बीजेडी नेता माने 7टी जातीय दल समेत 22टी राजनैतिक दलर मुख्यंकु भेटी महिला संरक्षण बिल सपक्ष में सहमति लोड़ाकू निष्पत्ति होइथिला। बीजेडी नेता माने मध्य सबु राजनैतिक दलर मुख्यंकु भेटी विधानसभा और संसद में महिलांको पाई 33% संरक्षण सपक्ष में समर्थन हासिल करथिले। 2019 मार्च 10 तारिख रे बीजेडी 33% महिलांको लोकसभा प्रार्थी करिबो बोली मुख्यमंत्री घोषणा करथिले। तबे सीधा सलख आमे आपन को नै जाउछु लोकसभा भवन को नै जाउछु। As you heard to see me, this is a historic day today. I am proud to be part of this historical moment when a government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji has undertaken to repair the deep-rooted asymmetry and to give an equal share in India's future to all of us women. I am grateful for the honor you have given me of speaking about my years in Parliament. We are going to a new building, and hopefully this grand edifice will reflect the aspirations of a new Bharat. Today, I have been entrusted with the responsibility of addressing this esteemed assembly as the most senior parliamentarian in the Lok Sabha. I entered Parliament at the age of 32, 9 years after the death of my husband. My debut was as Minister for Environment. Today, 35 years later, I have spent most of my adult life in this institution, and I have seen 7 prime ministers and the shaping of grand history. It has been an arduous, rocky road. I had several terms as an independent member and finally joined the Bharatiya Janata Party under Shri Atal Bihari Vajpayeeji's leadership in 2004. Since then, I have remained a proud member of the BJP as well as this august house. Being a member of Parliament is an immense responsibility as it entails safeguarding the trust of lakhs of voters who elect us to be their voice. You are given power, but this power must always be used for their good. The job demands unwavering commitment, moral rectitude, and courage. Basically, it demands great love for your country and infinite kindness towards all. Each one of us gets this opportunity to make a difference, provided we sublimate our own ambitions and see ourselves only as vessels or bridges or protectors of all the beings that need us. The last person in India who believes himself forgotten. People who cannot navigate for themselves and appoint us as their helmsmen. I have tried to make the most of every minute to bring about change wherever I am, whether as Environment Minister, when many institutions and laws that safeguard us were passed, as Social Justice Minister setting up Alimco, which now looks after all the disabled in the country,
Childline, which was regarded internationally as the best institution for looking after street children, stopping child labor in the carpet industry. You can change things wherever you are. For instance, in the opposition as a BJP member, as chairperson of the often ignored Assurances Committee, we changed the way people were experimented on by pharmaceutical companies. They were not paid or even asked before becoming guinea pigs. This was changed by us. During Atalji's time, we brought in the vital red and green dot on foods, allowing people to know whether they were eating vegetarian, non-vegetarian food. We repaired an institutional deception by food companies. No service, no job is too small that it should not be taken seriously. My happiest moment was being given the responsibility by the Prime Minister, who coined the phrase Beti Bachao, Beti Padhao. Within 2 years, we changed the thought of the country, the entire thought of the country, and the statistics show that it is a lasting change. From 130 women per thousand, a shameful statistic, it rose to 950. Crores of girls were saved. Not only that, it is now seen as a shame and a crime to do away with girl children, whether in the womb or newly born. Now that we are going into a new building, a new phase, I want to tell all the young people here that politics is never fulfilling unless you have a grand passion and a commitment outside it, unless a fire of curiosity burns within you. No service is too small in the service of Mother India. What I have learned is that each constituency is your family. Within my family, there are a million microcosms of individual families. Each of them depend on us. We are a part of their lives as they are of ours. I have seen my primary duty to look after each family that has placed itself in my care by electing me, by seeing me as one of their own. In this matter, I wish to say that the Prime Minister has seen beyond people as a statistic and has meticulously seen to the needs of each individual family. Opening bank accounts, giving dignity in the form of toilets, home water taps, building homes for the poor, gas cylinders, giving young people loans, skilling them, protecting them through the largest pandemic in history, seeing that no one remained hungry. Before I end, I would like to tell you a few things that I have learned in my long journey so far. Never give up. There are times in all our lives where the world sits heavy on our shoulders and there doesn't seem any path ahead. It will take courage, determination, and a commitment to something larger than ourselves to forge ahead. Have faith in the goodness of your fellow man. Quieten your mind and soldier on. Believe in yourself. You are an instrument of goodness. If you fight for good, you will always be protected. Use the pain that we all have in our hearts to make yourself a better human being, not to embitter you. Use the pain in your heart to see the pain in the hearts of millions of beings around you and dedicate your life to them. I want to speak to all the women here. The world is still an unequal place, and we as women need to be the greatest champions of and for each other. We need to support and protect each other, especially young women across the social spectrum who lead a marginalized existence so that they have the ability to forge their own destinies. There is no greater power in the world than the power of empathy and kindness, and this transforms the life of someone weaker than you. Kindness serves as its own reward. The greatest bank balance that we will ever possess is that of good deeds that we leave in our wake. That is the only legacy that will remain. My faith in God is unwavering. I see Him in everyone and everything. I see everything as sacred. I leave you with one thought. We are all part of one divine thread, and we are all connected, closer than we can imagine. Let us, irrespective of any differences we may have, wish happiness, protection, and on this holy day of Ganesh Chaturthi, a life free of obstacles for us and all our countrymen. Illuminate the lamp of goodness in our hearts. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
आपने बिल्कुल सही कहा। ये वो देश है जहां बेटियां आगे बढ़ती हैं। ये वो देश है जहां परंपराओं के साए में आधुनिकता पनपती है। ये वो देश है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका नारा है विश्वगुरु भारत, ये देश हमारा है। अब मेरा सादर अनुरोध लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी जी से कि वे अपना संबोधन प्रस्तुत करें। Honorable Vice President of India, Honorable Speaker Lok Sabha, Honorable Prime Minister of India, Parliamentary Affairs Minister of both the houses, Opposition leaders Kharge ji, all my senior leaders and distinguished, esteemed colleagues of both Lok Sabha and Rajya Sabha. Having seized this opportunity without making any compunction, without mincing any word, I must state that I feel elevated and elated of having been stood in this podium, which had witnessed a caravan of historical episode and numerous momentous events in the midst of the galaxy of luminaries. संसदर सेंट्रल हॉल रो आपण माने सीधा प्रसारण देखुथिले। आज नुआ संसद भवनर प्रथम दिन कार्य दिवस आरंभ होईछि। समय होईछि बुलेटिन रे गोटे ब्रेक नै छिबा। नंदीघोष अपडेट प्रायोजक अरुंधति ज्वेलर्स। अरुंधति ज्वेलर्स रो 5 स्टार प्रॉमिस आमे अछु ना। For us, A stands for Artificial Intelligence, B stands for Big Data, and C stands for Cryptocurrency. See things differently and join RCM Global. OSL is a trusted service provider in different sectors across various industries. Our expertise in achieving and delivering the best. It's not just a habit, it is a way of life. OSL Group. मई जून की तपती जुलसती गर्मी या सावन में लगातार बूंदों की बारात, पोते पोतियों का उछलना कूदना या मौसी का मसाला कूटना या लाडली की रूफटॉप पार्टी, क्या क्या नहीं झेलते हैं अब। बात जब छत की हो तो कोई हमसे भी पूछ लो हमारी ख्वाहिश। रूफ ऑन सीमेंट, हर छत की ख्वाहिश। I am a world skill champion. I am an automobile expert. We run startups. Industry 4.0 is here. I am a proud mariner. Welding is my passion. We are robotic engineers. Home away from home. CV Raman Global University, Odisha. Homegrown, world class. ब्रेक पर स्वागत। आरंभ हेबाकु जाउछि मुख्यमंत्री डिजास्टर रेजिलिएंट सलाइन एम्बाकमेंट प्रोजेक्ट। एथिरे 200 किलोमीटर लुणा नदीबंध को सुदृढ़ करा जिवो। एथिपाई पाखापाखि 800 कोटी टंका खर्च करिवो जलसंपद विभाग। एहार 36टी काम रहिछि जहार टेंडर प्रक्रिया होइछि। वर्षा सरिबा मात्रे नवेम्बर रु काम आरंभ हेबो। ए योजना सरिबा को 5 वर्ष समय धार्य करा जाइछि, किंतु जलसंपद विभाग निर्धारित समय पूर्व काम सारिबा को योजना करिछि। एहाद्वारा नदीबंध को बात्या प्रतिरोध करा जिवो।
फल गाँ भितर को प्रवेश करिबो नाही सामुद्रिक ज्वार कूलरू 10 ରୁ 12 किलोमीटर भितर लुणा नदीबंध निर्माण कराजिबो बोली कहिसंती जल संपद सर्वोच्च जंत्री। साइक्लोन बेले जंती लुणा आम समुद्रिक जो जुआर उठिकी जो आमर होउची ये होउची आमर पानी पशि जाउची बंध डेइकी जो लो हाइट बंध अच्छी किंबा से गुड़ा डिजास्टर रेजिलिएंट नुह से बंध गुड़ा आम डिजास्टर साइक्लोन रेजिलिएंट करचु सो दैट आमर जो हम सर्ज एक्शन जो आम वेव आसो से पशब ना आम कंट्री साइड के ए संपर्क में सूचना देवाई फोन लाइन रे अछंती भुवनेश्वर रिपोर्टर प्रियप्रीतम महांती। प्रियप्रीतम डिजास्टर रेजिलिएंट सालाइन एम्बाकमेंट प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री ए जो सुचिंतित योजनाटी अच्छी यार उद्देश्य कौन रही है ए योजना द्वारा राज्य को कौन लाभ मिल प्रियप्रीतम? प्राकृतिक विपत्ति मुकाबला ओडिशा महारथ हासिल करत्या मुकाबला जो रणकौशल अच्छी ओडिशा सरकार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक नेतृत्व में सारा विश्व प्रशंसा करे उपकूल अंचल बात्यार प्रकोप को रोकवा आरंभ हो मुख्यमंत्री डिजास्टर रेजिलिएंट सालाइन एम्बाकमेंट प्रोजेक्ट जो व्यापक भाव लुणाबंध निर्माण कर सामुद्रिक जुआर को प्रतिरोध कर सहायक बात्या पर बन्या गाँव गाँव गुड़ी को रक्षा कर आसंता नवेम्बर मासरू व्यापक भाव निर्माण कार्य आरंभ हो बर्तमान टेंडर प्रक्रिया अच्छी टेंडर प्रक्रिया अल्प दिन भर सर आवश्यक स्थले पुराना लुणाबंध जो अच्छी सुदृढ़ कर टेंडर सरी कम वर्षा सर मात्रे आरंभ हो नवेम्बर रू वर्षा छाड़ा मात्रे नवेम्बर में लुणाबंध मरामती नुआ लुणाबंध 2 किलोमीटर जाए लुणाबंध कम कारण आम बेलाभूमि 480 किलोमीटर बेलाभूमि मुख्यतः गोपालपुर पारादीप जो जगतसिंहपुर अंचल जो गोपाल बेलाभूमि देखु से अधिक बात्या प्रोन रही तेणु से अंचल को अधिक गुरुत्व दिया लुणाबंध गुड़ी को कूल 10 ରୁ 12 किलोमीटर भीतर निर्माण कर पाखापाखि 800 कोटी टंका खर्च कर जल संपद विभाग आ मुख्यमंत्री डिजास्टर रेजिलिएंट सालाइन एम्बाकमेंट प्रोजेक्ट अधीन लुणाबंध निर्माण काम सुदृढ़ीकरण 36 के क्षेत्र बा काम रही योजना सारे को 5 वर्ष समय धार्य कर राज्य सरकार मिशन मोड रे नहीं 5 वर्ष कम बाद निर्धारित समय पूर्व ही सारे कारण ओडिशा प्राकृतिक विपर्य चिर सहचर मुकाबला करने द्वारा लुणा पानी द्वारा लुणा नदीबंध को बात्या प्रतिरोध संपन्न कर सामुद्रिक जुआर जो गाँव भर पानी प्रवेश कर 1999 महाबात्या समय प्राकृतिक विपर्य मुकाबला से व्यवस्था नाला मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक शासन को आसला प्राकृतिक विपर्य विभिन्न प्राकृतिक विपर्य मुकाबला विभिन्न रणकौशल प्राकृतिक विपर्य को मुकाबला करने गोटे सुचिंतित योजना को अणा मुख्यमंत्री डिजास्टर रेजिलिएंट सालाइन एम्बाकमेंट प्रोजेक्ट जहाद्वारा कि नदीबंध को बात्या प्रतिरोध कर गाँ भीतर को प्रवेश करना सामुद्रिक जुआर। आपण सूचना अनेक धन्यवाद प्रियप्रीतम। इरानी ग्यांग गिरफ मामला आज 2 दिनिया रिमांड रे जिबे बापी ओरफ निशिकांत पात्र खोलिब इरानी ग्यांग हनी ट्रैप और ठकेई गुमर। इरानी पात्रंक स्वामी हेउछंती निशिकांत 2 दिन रिमांड रे जिबाको अनुमति देइछंती भुवनेश्वर जेएमएफसी 1 कोर्ट। निशिकांत को 5 दिन पई रिमांड रे नेबाको आवेदन करिथिला तमांडो थाना पुलिस। घटना रे 4टी मामला रुजु होइतबा बेले 5 जन गिरफ होइछंती। आगोको रिमांड रे आसीबो इरानी पात्र। खोलिब इरानी ग्यांग हनी ट्रैप और ठकेई गुमर। इरानी पात्रंक स्वामी हेउछंती निशिकांत पात्र। घटना 4टी मामला रुजु होइतबा बेले वर्तमान पर्यंत 5 जन गिरफ होइछंती। तांकु रिमांड नेबा पई आवेदन करा जायथला एवं रिमांड रे जिबा पई भुवनेश्वर जेएमएफसी 1 कोर्ट अनुमति देइछंती। आज 2 दिनिया रिमांड रे जिबो निशिकांत पात्र ओरफ बापी। इरानी रो से होइछंती स्वामी एवं तांको जानतरे जेहेतु ए सबु किछि चलिथला इरानी पात्र रूपजाल रे समस्त को फसाउथिले मिछ प्रतिश्रुति देउथिले एवं टंका हड़प करुथिले। तेणु रिमांड अवधि रे अनेक किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य सामना को आसीबो। सुंदरगढ़ रे काया मिलाउछि स्क्रब टाइफस 24 घंटा मध्य चिन्हट हेले आउ 10 जन आक्रांत। ए नुआ आक्रांतों को मिसाई सुंदरगढ़ रे आक्रांतों संख्या 193 रे पहुंची।
पूर्वर स्क्रब टाइफस रे जनकर मृत्यु होता तेज चिकित्सा यथेष्ट औषध महजूद थिबा सूचना देइछन्ति जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी यासो लोकों को सचेतन कराजिबा सह टेस्टिंग वृद्धि करने को निर्देश दिया जाइछि। सुंदरगढ़ सहर उपकंठरे हाथी आतंक उत्पात करने सह धान फसल नष्ट करुछन्ति दुईटिकिया दंता हाथी हाथी पाई राजरास्तार अटकिला शह शह गाड़ी दुईटी दंता आसी निकटस्थ जंगल में रही हाथी मानक निया हुड़ा और बाण फुटाई विजु एक्सप्रेस वे पार कराइथिले स्थानीय लोके दीर्घ समय चेष्टा पर लोके और वन विभाग हाथी मानक घौड़ाइबारे सफल होइछन्ति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरुमेव देव सर्वकार्ये सुसर्वदा धरापृष्ठरे विराजमान करिसेंति प्रभु गजानन गाँठू सहरर सबुठी होई उठिछि चलचंचल सुउच्च तोरण सांगकु आखि झलसा मेढ़ साजसज्जा होइछि होमयज्ञ प्रकंपित होइछि परिवेश केउठी सप्ताहे तो केउठी मासे धरी चलिबो गणपतिଙ୍କ पूजा मेढ़ बुलिबाकु लोक भी भिड़ जमाउछन्ति तासह केउठी मीना बजार बुलिबार मजा द्विगुणित करुछि सुउच्च तोरण सांगकु सुंदर आलोक सज्जारे झटकुछि विभिन्न सहर भुवनेश्वर बरगढ़ शहीदनगर और बरमुंडारे आकर्षणीय गणेश मूर्ति पूजा पाउछन्ति कटक रे सकाळु सकाळु शिक्षानुष्ठान चलचंचल होई उठिछि। जाजपुर जिला बड़चना ब्लॉक विभिन्न पंचायत रे भत्ता बंटन कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। ए भत्ता बंटन कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भाव में मंत्री अशोक चंद्र पंडा जोग देइथिले। बड़चना ब्लॉक साउड़िया रईपुर बरपदा कोलनगिरी भली विभिन्न पंचायतर योग्य हिताधिकारी को मधुबाबू पेंशन योजना रे भत्ता बंटन करा जाइछि। उत्सव में बड़चना विधायक अमर प्रसाद शतपथी और स्थानीय जनप्रतिनिधि सामिल होइथिले। मंत्री और विधायक योग्य हिताधिकारी को भत्ता बंटन करथिले। रईपुर कोलनगिरी साहुड़िया बरपदा ये चारोटी पंचायत 448 जन भत्ता पाइबे और अतिरिक्त भत्ता मधुबाबू पेंशन योजना रे आम ब्लॉक रे 4000 रु अधिक जमा पाउछन्ति सारा राज्य में 4 लाख भी पाइले अतिरिक्त भावी एभली एक योजना हूँ लोक साहा देवाई जो मान भरोसा किसी ना तांको नवीन पट्टनायक सहा गरीब गुरुबा एवं आमर महिला एवं जो माने दुर्बल श्रेणीर लोक से सरकार साहाय्य पहुँचू एवं प्रशासन पाखे पहुँचू से उद्देश्य रखी आज ये पंचायत भत्ता बंटन कार्यक्रम समय सृष्टि नंदीघोष न्यूज@11 को एठी रखुछु। अपडेट खबर पई आपण माने लॉग इन करि परिबे www.nandighoshtv.com रे। नमस्कार। सह प्रायोजक घास तो जेते